Let's just begin by giving a small introduction about who we are. Lime Green is a visual art space which is based in Islamabad, Pakistan. The impulse for founding Lime Green is the vision and purpose to explore the magical creative narrative, to generate dialogues based on the contemporary methodologies and expressions, serving as a space to house the condensations of the creative process of art making of all kinds of genre. This year, we are so happy to present a series of talks currently online, which is titled as the Lime Green Journal, that tells stories of creative journeys, cultural and conceptual exchange, and artistic cross-fertilization, where we converse and explore the fascinating minds of creative people. We hope to inspire curiosity, ignite your imagination, and provoke new ways of thinking. For this feature, our guest is Ahmer Naqvi, who is a writer and journalist. His focus is on popular culture, enabled. Can you hear me? Yeah. His focus is on popular culture, particularly sports, music, and food. He has previously served as COO of the music startup Patari, head of digital media for the Cricket League PSL, and runs food tours by the name Khane Mein Kya Hai in Karachi. He is online as Karachi Khatmal, which sparks my curiosity to know what is the story behind this name, Karachi Khatmal. Uh, well, I think I've written about it somewhere online in detail. And I think, obviously, when you're going online, you wanna come up with something that's distinctive and unique. And I think, like, as will come through in our conversation also, for me, self-expression and of self-identity have been really major kind of themes in the kind of work I've done. That's where the name comes from, Karachi Khatmal, because as you may or may not know, that's my cat, Siggy. As you may or may not know, Khatmal is a slur for Shia Muslims. Um, the street version is because Khatmals suck your blood, and but my father, when I was younger, I was like, why is it called Khatmal? He's like, if you pick up a Khatmal from its leg, then it does matam like this. So whichever one you want to go with. But I think the reason I chose it was because I knew that it was a term that was used to describe my community in a derogatory way. और लफ्ज़ों की कुव्वत जो होती है वो एक्चुअली जो उनके मायने होते हैं और उस मायने का जो उसका मतलब है और उस मतलब की जो कुव्वत है वो आती है फ्रॉम ए कंसेंसस अराउंड व्हाट इट मीन्स। तो अगर हम जैसे कि बैड लफ्ज़ है अंग्रेजी में, तो दिस इज बैड का मतलब है कि बुरा है, बट बैड का इस्तेमाल एक स्लैंग तरीके में उससे भी कर सकते हैं। I can't think of a non-curse word to give an example, but you know what I mean. Like, Yes. is a bad. And so, what that means is that when there is a consensus around, like, अच्छा इस लफ्ज़ का actually मतलब ये है, so even whatever the literal translation as you can change, right? So I think that was the part of the thinking about it, because it's like a sort of defiance, a sort of, if I take ownership of this word, then I take away your power to hurt me with it, right? So that was the thinking, and again, as I said, it's catchy, it's memorable. That's the main reason for it. Do you agree that if I say it's a major part of your personality or your identity when you're introducing yourself to someone? If someone refers to you as Karachi Khatmal, would you Yeah, I mean, I accept it think without having any offense or without carrying the derogatory remarks towards it? नो आई थिंक देखो, पहली बात तो उसका मकसद ही यही था ना कि अगर उसको लोग उसको मेरे साथ जोड़ रहे हैं और उसको एक गाली की तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वहीं पे जो मैं करना चाह रहा था, जो जो एम था, वो अचीव हो चुका है, राइट। और दूसरी बात यही है कि ऑब्वियसली आई थिंक कि जिस टाइम पे मैंने जो भी लिखना वगैरह शुरू किया था, तो ऑब्वियसली उस वक्त तक इंटरनेट आ चुका था। तो इंटरनेट एक बहुत 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 बहुत
crucial, I guess, technological change था जिसकी वजह से एक्सेस के कौन लिख सकता है, किस चीज के बारे में लिख सकता है, कहाँ लिख सकता है, वो बहुत एक प्रोफाउंड तरीके से बदल चुकी थी, राइट? सो आई थिंक कि अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर इंटरनेट पे जैसे मैं खुद ही चुना ये नाम, तो इसके मतलब जो मेरा काम होता शायद बहुत कम लोग देख पाते, पढ़ पाते, तो इसमें किसी भी तौर पे आई थिंक, आई मीन ऑब्वियसली I think like it's it's a really happy feeling that people are able to see that and that people are able to associate that word with my identity or in a positive way rather than the way it was used when I first came up with this. I think it's quite thought-provoking. It stays in your mind. The first time I read your title, Karachi Khatmal, I had never forgotten it ever since. And anywhere, on any platform, if there's a mention of Karachi Khatmal, I would immediately know. I could actually create a character out of it. So it's very creative, which takes me to another question. If your creativity had a name, what would it be? Hmm. Um, What a name. I guess like I mean I I would name it Ahmer only. I think it's I don't, and I was thinking about this when I was thinking about your question regarding processes, etc. I think like, there isn't really any um, value in separating, at least मतलब ये मेरा ओपिनियन है, और लोगों का प्रोसेस मुख्तलिफ हो, कि कोई वैल्यू मुझे नहीं दिखती कि आप अपनी क्रिएटिविटी की सलाहियत को एक अलग तरीके से देखें, राइट? और टू सी इट अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ और आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ. सो I think like if I would name it, I would name it myself simply because I think for me, a lot of times the question isn't कि अच्छा सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मैं अपने क्रिएटिव काम करूंगा या क्रिएटिव रहूंगा या जो कुछ भी. Obviously, you have to have discipline, you have to have your schedules and everything. But I think creativity for me is something that अगर वो एक पौधा है तो उसको जो पानी मिलता है वो पानी मिलता है मुख्तलिफ आइडियाज से, राइट? सो वो मुख्तलिफ ख्यालात से, मुख्तलिफ जज्बात से, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से. एंड सो इन दैट वे आई फील लाइक कि आपकी क्रिएटिविटी, एटलीस्ट फॉर मी, इट्स समथिंग दैट जिसको हर वक्त कहीं ना कहीं से पानी मिलता रहता है. एंड उस तरीके से शायद जरूरी ये होता है कि आप अपनी you're open to receiving that. Yes. You're open to seeing experiences. I think कि जैसे कि एक चीज है कि अक्सर ना लोग कहते हैं कि I don't know, जैसे डिंग डोंग की बिल्ली है, तो डिंग डोंग की बिल्ली के ऊपर अगर आप तबसरा करें तो लोग कहें यार इस पे तबसरा करने की क्या बात है, तो इतनी बेसिक सी चीज है. बट that's where, I mean, obviously my interest is in popular culture. A lot of things in popular culture are so popular, they're so obvious that you don't really think about why is it popular, right? और तो ये मैं इसलिए इस मिसाल दे रहा हूँ कि अक्सर आप कहते हैं कि ओ until कोई चीज, कोई ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर या आर्ट नहीं है, मैं इस पे क्यों सोचूं, मैं या मुझे मेरी क्रिएटिविटी को क्या फायदा होगा इसके बारे में सोच के. बट आई थिंक आप there is basically, what I'm trying to say is that there is the spirit of creation, the spirit of creativity in just about everywhere you look, right? So the question really is कि आप क्या देख रहे हो, किस वक्त देख रहे हो. So I think to answer your question in this very roundabout way, like I would name it myself because I think that's, if I am creative, it is because of who I'm trying to be. Yeah. So tell me, what are your core, how do you describe the core concern of your creative work? Yeah, I was thinking about this. Okay, how do I say what I do, right? Because I remember when I was at Patari, we were trying to get Nouri to launch their album on our platform. And so I'd gone to meet Ali Noor for the first time. He'd met the team before and he was super skeptical. Um, and when I met him, so I just gave him a little bit of brief. Okay, I work in cricket also, and I write for this cricket publication. I work in music, and I've written mostly on cricket and music. And Ali Noor is like, oh,
doesn't make any sense to me. But see, in cricket, somebody wins and somebody loses. But in music, nobody wins or loses. And I was like, yeah, that's a fair point. But my point of interest in both these things is that they give people a lot of joy. And when they give people a lot of joy, they also bring people together. Well, they bring people together even when they're not giving joy. Pakistan's cricket team being the best example. But um, and so I think like if there's a through lines in the work that I do, I think I like talking about joy. I like talking about what brings people together. And I was very flattered to be invited um, to this conversation. क्योंकि मैं अपनी नज़र में अक्सर अपने आप को I don't think I see myself as an artist. Um, एंड ऑब्वियसली अपनी इनसिक्योरिटीज वगैरह भी यहाँ पे हैं मगर एक वजह उसकी ये भी है क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं खुद कुछ आर्ट नहीं बना रहा होता मैं और लोगों को बता रहा होता हूँ कि फलां चीज आर्ट क्यों है you know and I think obviously if you're talking about literature or music or whatever that's obvious when you're talking about sports as art sometimes that's a bit more unique बट आई थिंक कि मेरे साथ वही होता है कि जो मेरा प्रोसेस जो लाइक कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों से लोगों को लुत्फ आता है जो चीज़ें लोगों को पास लाती हैं उनके अंदर वो क्या ऐसी बात है जिस वजह से ये हो रहा है what is it that's creating joy what is it that's creating a sense of unity when these things happen and I think like I mean in a sense I see myself a lot of times as a journalist or so I'm investigating कि डिंग डोंग वाली बिल्ली इतनी मकबूल क्यों थी because I think the answer to that question tells you something far more profound than you would have considered otherwise. And which aspect of your work enables you to be most creative? Something that you often don't think about, but now that I'm asking you about this, what is it that sparks the most creativity in you? I think the desire to the desire to uh, see the world be different, desire to change the world. मतलब I think एक बहुत ही egoistical statement होती है कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ या जो कुछ भी और I don't think कि मतलब कोई एक फर्द उस तरीके में दुनिया बदल पाता है जिस तरीके से वो चाह रहा होता है बट आई थिंक देयर इज वैल्यू इन ट्राइंग टू गो फॉर दैट इन ट्राइंग टू मेक दैट योर एम तो आई थिंक कि मेरे लिए जब वही सवाल यही उठता है कि अच्छा so I'll give you an example पटारी पे अगेन या जरा मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ आपको कि पहली पीएसएल जब हो रही थी तो उसमें 5 मुख्तलिफ टीमें थी तो एक उस वक्त तक क्रिकेट ऑब्वियसली एक कॉलोनियल स्पोर्ट है और क्योंकि वो एक it's a really long conversation, but it's colonial. Okay, so that's why it's talked about in English. The commentaries in English and the all the stuff that the Pakistan Cricket Board put out was in English, etc. And so in the first PSL, recognizing that this actually represents something Pakistani, and we were hosting it in the UAE, so we had to find ways to create that connection more intrinsically. One of the things that I did was that we would have tweets and Facebook statuses and whatever in the local language of that team. So we'd have Sindhi and we even had Gujarati for Karachi and we had Baluchi for Quetta, Pashto for Peshawar, etc. और उसमें वही था कि like it was you had to think about how to talk about cricket differently because you're doing it in a different language. But it was important and I was inspired to do that because I think if cricket is already bringing people together and then you talk in people's own in people's own intimate language in people's own obviously थोड़ी सी कर रहे हैं but आप बदल रहे हैं कि हम क्रिकेट के बारे में बात कैसे कर सकते हैं क्रिकेट को हम देख कैसे सकते हैं क्रिकेट के बारे में सोच कैसे सकते हैं because you're speaking in English because you're using all these phrases that came out in Victorian era आप उसी morality को अपना बनाने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं है क्योंकि हम we're not people who have horrible food and have a monarch and killed half the planet. So Yes. why should we behave like them? Yeah. And so where do all of these ideas, these concerns, these thoughts, they're birthed? Do you have a studio space? Have you created or curated an area where you feel like
you have the entire freedom to think about all of these things. Yeah, I think right now, the last year, the flat that I live in, I really, mashallah, say, I really like it. It's got this really nice view of Karachi. It's in the southern area. It feels really in the heart of the city. But, I was thinking about this question, and I think that for me, all I really need is a place where I can pace, जहाँ मैं चल सकता हूँ, Yeah. क्योंकि जब मैं सोच रहा होता हूँ किसी चीज के बारे में, and basically the writing part for me doesn't take that long, but the pre-writing part, The research phase. not even the research भी आप कर लेते हैं, but then I have to think about it. I have all these different things in my head, and I have to figure out how do they come into one story or narrative or point. And I think I take a lot of pleasure in being able to कि अगर एक यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ खाने की, but मैं मिसाल ले How do you live in an atmosphere of constant flux? How does it affect your creativity? Or is it something that inspires you continuously? यार I think कि I think when we talk about this, मेरी assumption ये है कि आप flux से मुराद पाकिस्तान में रहना है. Okay. However you interpret it. आई मीन यहाँ पे आई गेस लाइक जिंदगी सबकी कश्मकश में सारे वक्त रहती है, बट पाकिस्तान में रहना वो ये है कि जिंदगी का वीडियो गेम आप हार्ड लेवल पे खेल रहे हैं. तो आई थिंक मैं ये इसी बार यही सोच रहा था कि क्रिएटिविटी को अक्सर फायदा होता है फ्लक्स से, बट उस क्रिएटिविटी से आपके पैसे बनने का बहुत नुकसान होता है फ्लक्स से. तो एक विशियस सर्कल होता है कि जहाँ पे आई थिंक के अगर गहमा गहमी है या मतलब देयर सो मच हैपनिंग, it's provoking you, it's making you think, it's making you want to do something about it, it's making you react. तो उस सेंस में आई थिंक कि मतलब ऑब्वियसली वो ये फ्लक्स है, chaos है, हंगामा है, इससे इट्स नॉट नेसेसरली कि कोई नुकसानदेह चीज है आपकी क्रिएटिविटी के लिए, मगर फिर वही होता है कि मतलब आपकी इकोनॉमी तबाह है या लोग फायर हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हैं, ये हैं वो हैं, और फिर उसके बाद यू नो you either have to find work which is not very creative or you don't have work, and आपकी फिर creativity मतलब आप जाके परचून वाले को ये तो नहीं कह सकते कि भैया मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे 1 किलो आटा दे दो. तो और वहीं पे इसकी एक और मतलब जो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन है कि क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की ये हालात हैं, तो ये भी है कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो पिछले 40 साल से पाकिस्तान में ज्यादातर जो क्रिएटिव एंडेवर्स हैं वो वैसे भी सिर्फ अमीरों का ही या लाइक आई थिंक अल्टीमेटली हाँ ठीक है कि कुछ कारीगर हैं या ट्रक पेंट कर रहे हैं या यू नो फोक सिंगर्स हैं ये वो, तो ऑब्वियसली ऐसी मिसालें हैं आपके पास, और प्रोबेबली उनका ज्यादा अहम और इन्फ्लुएंशियल किरदार है आपकी लोकल सकाफत पे, मगर जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहेंगे, और वो मेन स्ट्रीम ऑब्वियसली बनती है फ्रॉम वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिकल एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स, और उन सब पे आने की इजाजत और कैफियत सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है. एंड so and again that I think also ये फ्लक्स का एक और नतीजा यही है कि फिर जो क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक ही तबके से होते हैं, और आई थिंक उस एक तबके से होने की वजह से भी आपकी क्रिएटिविटी पे काफी एक मनफी किस्म का असर पड़ता है, क्योंकि आप उसी एक छोटे से, अभी पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है कि जो हमारा, अगर आप कहें आप 1% में भी फिर रहे हैं तो 22 लाख लोग तो यही हो गए. तो
it's that's a sizable number, but ultimately it ends up being a very restricted space. But even So I even would that move. even that space that you're talking about, जो एक बहुत tight restricted जगह है, वहाँ पे भी you carry an immense responsibility of conducting your ideas, of showcasing what you have to say about the flux जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो I मुझे mean, I बताइए. think. Yeah, sorry. Sorry, yeah, go continue. आपका सवाल क्या था? तो मैं आपसे पूछना ही चाहिए थी कि आपके लिए एक आइडियल स्टेट या एक आइडियल एनवायरनमेंट कहाँ है, कौन सा कैसा है, हाउ डू यू क्रिएट इट, व्हाट इज इट लाइक वेयर यू फील लाइक यू एबल टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वेट, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी थिंग. और अगर आप Uh, किसी एक बंदे से भी अगर आप कम्युनिकेट करें, कोई अगर आपका ओपिनियन है, कमेंट है, that really puts you in a place where you have to consistently defend yourself or prove yourself or get your idea across. So what is that ideal state where you perform the best, where you don't think about where. आइडियल स्टेट तो होगी अल्लाह मियाँ के साथ उसमें इस दुनिया में तो कोई आइडियल नहीं मिलेगा हमें. आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है कि जो आपकी उस एक एक इलीट आबादी है या उस Hmm. तबका है, उसी को एक्सेस मिल रही है, उसी को मौका मिल रहा है क्रिएटिव होने का. तो उस पे जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी इज नॉट जस्ट टू द 1% दैट यू जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, बट एक्चुअली तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी 100% को, राइट? और आई थिंक बिल्कुल. यहाँ पे एक बड़ी मतलब मैं जर्नलिज्म की मिसाल आपको ज्यादा दे सकता हूँ क्योंकि मेरा उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा रहा है कि आपके पास अभी भी हाल मतलब जो मगरिब के बड़े बड़े अखबार या चैनल्स हैं उस पर कुछ टोकन पाकिस्तानी हैं जो लिखते हैं. बहुत सारे इसीलिए लिखते हैं कि उनको उनका सरनेम और लोगों को पता है. और अक्सर वो अजीब बोंगी बातें लिख रहे होते हैं. I agree, I agree. एंड आई थिंक कि वहां पे एक वही एक बहुत बड़ा मसला है खास तौर पे कल्चर के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ इस पे फॉर्मल तरीके से बहुत कम काम हुआ है. तो लोग अपनी झूठ झपाट बातें झाड़ रहे होते हैं, Pseudo उससे झूठ intellectuals जिनको झपाट हम से कहते जुड़ी. हैं. सूडो तो सभी हैं अलीना, आई बिल्कुल. डोंट नहीं, बट लाइक आई थिंक सूडो वगैरह की जो मतलब ना वो एक गाली देने में तो हम किसी को भी गाली दे देते हैं. जो मेरा अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो मैं उस तरीके से कहूंगा कि आपने अपनी सही तरह इस मौजू पे तहकीक नहीं की है, राइट? जी. यू हैवंट रियली understood what this topic is. So let me take music for example. So many people talk about म्यूजिक इन पाकिस्तान एंड दे आजकल बड़ी बात चल रही है कि पाकिस्तान में जी कल्चरल रेवोल्यूशन आ रहा है, मौला जट भी हिट है, जॉयलैंड भी हिट है, और हसन रहीम है, और ये है और वो है. Hmm. और वहीं पे मतलब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं मगर इस पे कभी भी फोकस नहीं करते कि यार अगर आपके पास कोई प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है, रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है, म्यूजिशियंस को गानों के पैसे कॉपीराइट्स नहीं नहीं है. मिलते हैं, कॉपीराइट्स की या. इन्फोर्समेंट नहीं होती है. कॉपीराइट्स की अब इन्फोर्समेंट होती है और वो एक बड़ी बदमाशी भट्टाखोरी किस्म के तरीके से होती है, जहाँ पे जो एक्चुअल पेपर वर्क है और जो लीगैलिटीज हैं और जिनके नाम पे रॉयल्टीज कलेक्ट हो रही है उनको क्या मिल रही है या नहीं, इस पे कोई देख देख दाख नहीं है. जी. और यही होता है कि मतलब खास तौर पे इफ यू ओल्ड इनफ यू शुड रियलाइज दैट लाइक एवरी 10 years और सो पाकिस्तान में अक्सर किसी टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से कि जी यूट्यूब आ गया या उससे पहले केबल एंड आ गया या उससे पहले दो चैनल की परमिशन मिल गई व्हाटएवर, तो वो एक 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 बर्स्ट आता है. क्योंकि एक जगह है जहाँ पे अगर जिन लोगों के पास इनफ इनकम है और उनके पास इतना टाइम है कि वो ये लगा सकते हैं इस काम पे, तो वो लगाते हैं और उनको थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है और पेप्सी के ऐड में आ जाते हैं और फिर वहां खत्म हो जाती है बात. तो अगर आप इस दफा भी कुछ बदला नहीं है मगर आपने चार गाने अच्छे सुन लिए और आपका टाइम स्क्वायर में एक पाकिस्तानी की शक्ल नजर आ गई तो आप कह रहे हो कि जी रेवोल्यूशन आ गई, तो यहाँ पे मतलब इसको जो भी आप टर्म इस्तेमाल करना चाहें, बट जो हम बात कर रहे थे कि जो एक जिम्मेदारी है कि आप जी. अगर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आपको उसको ना ही उसके बारे में सही तरह से इल्म है, ना ही आपने उस पर जाके कोई तहकीक की है, और जिन दो लोगों से बात की है उन्हीं लोगों की आप तारीफ उस उसमें कर रहे हैं, तो फिर और ये मैं मतलब एक बिल्कुल सहाफत के नजरिए से देख रहा हूँ, मगर इस किस्म की इंटेग्रिटी का ये सवाल हर किसी हर भी हर हर जॉनरा में अप्लाई प्रोग्राम में होती है. आता है आई एग्री टू बिल्कुल. दिस. बिल्कुल. तो आई थिंक कि वहां पे
और इनफैक्ट एक मैं यही बात करना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान में मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस पे भी दिखाई देती है कि हमारे यहाँ एम्बिशन नहीं होती लोगों के अंदर इतनी। और आई रियलाइज कि मैं बिल्कुल एक अंकल की तरह हूँ, बातें कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एम्बिशन नहीं है, बट मतलब मेरा ये इससे इस कहने की मुराद ये है कि आप आपने कुछ किया और थोड़ी सी शोहरत मिली और फिर यू नो पाकिस्तान में 10 लोग आपका नाम जानते हैं या जो कुछ भी, और आप उससे खुश हैं, और वही मतलब उसी चीज को आप वापस दोहराए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। उस वो एक पे ये मंजन बिक सोचने गया की ना कि यार आपका, वो एक आपका एक एग्जैक्टली मंजन फॉर्मूला इज बन अ गया। ग्रेट वर्ड फॉर इट। यस, यस। तो अब ये है कि यार कभी मतलब अच्छा मैंने मंजन यहाँ तो मैं बेच रहा हूँ, व्हाट इफ आई set my sights higher. Like I'm considered the best manjan maker in Islamabad. I want to be the best manjan maker in the world. And when you start thinking like that, then you're starting to think in terms of changing not just your own circumstances, but like larger structural and institutional things as well. और वहां पे फिर आप यही सोच रहे हो कि यार if I need to make it to the top, it can't just be me, it has to be, but it is not possible to just chart your own way there. The requisite institutions have to be built up as well. Well, let me get on that also. Or um, I think कि खास तौर पे क्रिएटिव फील्ड्स में पाकिस्तान में सिर्फ लोग अक्सर यही करते हैं कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत जज्बे से, सच्चाई से, प्यार से कोई चीज बनाते हो, फिर कहते हैं यार यहाँ की आवाम गधा है, गधी है, या ये है या वो है, वो। And I'm guilty of doing that as well. But at some point, like, yeah, it's not easy, and it's not like I really hate that this is an advice I have to give to people in Pakistan. But you have to be involved in also setting up the structures and the institutions in this country. And that's just the burden that creative people, creative professionals will always have on them in Pakistan until things change very radically. So when we talk about the times that change radically and how they have shifted moods and thinking methodologies, could you talk about any reflection of time or mood of the culture that inspired you the most in your creative process? It टाइम could से be आपकी recent. मुराद मतलब ये It कोई एरा या कोई एनी कौन सा? एरा आपके पूरे जिंदगी में कोई ऐसा टाइम, या आप पुरानी आपकी आपकी होने से पहले का कोई टाइम, कोई पहले का कोई एरा जिसमें यू फील लाइक यू बिलोंग देयर, यू फील लाइक दैट हैज नो, इंस्पायर्ड द मोस्ट एंड आई यू थिंक कि एक चीज मुझे हमेशा से यही रही है कि या आई मीन I definitely am not a fan of the era that we grew up in, but I think व्हाई I wouldn't have व्हाई been सो like I think वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई थिंक कि अगर मेरी इस एरा से जो भी मायूसी है वो हर एरा से होगी, सो इन द फ्लिप वे टू से इट, लाइक दिस इज एज गुड एन एरा टू बी बॉर्न इन एज एनी अदर। एंड आई थिंक मेरा इस पे अगर हम तारीख के बारे में यहाँ बात करें तो ऑब्वियसली मेरा एक स्ट्रेट मर्द होने की वजह से जवाब बहुत मुख्तलिफ होगा और लोगों के, तो आई अंडरस्टैंड दैट प्रिविलेज ऑल्सो। बट आई थिंक बुनियादी तौर पे um, लोग हमेशा ना अपने जमाने को देख के ओ हमारे जमाने में दुनिया बड़ी बदली है, ये हुआ या वो हुआ। दुनिया has been around for billions of years. Humans have been around for like a few million. Human uh, evidence of culture amongst humans that has survived is only like 6,500 years ago. Um, and so we're a very young species, and most of what we think is unique to us has already happened to people in the past also. I think an example I really love is um आज से 5,000 साल पहले इराक में, I'm forgetting the name of the civilization, was the Akkadian or something. तो उनकी वो क्ले टैबलेट्स पे यूनिफॉर्म अंदाज में वो लिखते थे, तो वहाँ वो उनके करोड़ों क्ले टैबलेट्स, मतलब देयर so many that we have access to, well not we have access to, गोरे लेके भाग के बैठे हुए अपने अजायब घर में दफना के बैठे हुए उसे, and they don't have the resources to even translate all of it. But या one of the ones I translated is a letter from like a teenage boy who's studying in a school 5,000 years ago, and he's written to his mother saying कि
भाई नया साल शुरू हो गया और तुमने मुझे कोई नए कपड़े नहीं भेजे, और मेरी क्लास में जो लड़का पढ़ता है उसका बाप मेरे बाप का मुलाजिम है, मगर वो नए कपड़े पहना हुआ है, और सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं कि भाई तेरा बाप गरीब है क्या, वो तो तेरे बाप का मुलाजिम भी नए कपड़े पहना है. हम्म. This kind of concern is true today as well. You know, Yes. I think we really overestimate कि ओ जमाना कितना फर्क था या मुख्तलिफ था, ये था या वो था. आई थिंक कि the human condition is very similar across time. And I love an example of something like this, which tells you that at a very basic age, like, having petty concerns, complaining to your mom, being jealous of somebody in your social group are are very basic and recurring influences. So I think कि यहाँ पे ये सोचना कि काश मैं उस एरा इस एरा में होता. हाँ, अगर ये है कि आप किसी अकलियत के मेंबर हैं और आप पाकिस्तान में अहमदी हैं. आई एम श्योर यू, आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर देम, बट यू कैन मेक दैट आर्गुमेंट कि 1974 से पहले जो पाकिस्तान था Mm-hmm. ऑब्वियसली डिफरेंट देन व्हाट इट इज फॉर देम टुडे. बट I think ultimately we only know the time that we're born. It is very difficult to compare to something we don't know. Yes. Or it's pointless to me to compare it to these other things, because I feel ultimately वही तरीके, मतलब आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बट ऑब्वियसली हमें पता है क्लाइमेट चेंज क्या है और क्यों हो रहा है. बट अगर उसका आप एक्सपीरियंस सोचें कि एक अनस्टॉपेबल सी प्रॉब्लम है ऑन द होराइजन, और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे रुकें, क्योंकि आपकी अपनी सोसाइटी अपने इतने मसलों में पड़ी हुई है कि वो इसको सोच भी नहीं रही. Is very similar to Baghdad when the Mongols were arriving, right? There's this huge problem that everyone's telling you about is going to happen in the next few years. It's destroying everything that you hear about, but there's so much political infighting going on. No one has the time to think about how do we stop Genghis Khan or the Mongols, and then they come and destroy everything. So I think someone living through it, that experience versus our experience of whatever we're living through today in terms of the emotions is not that different. So I think कि यहाँ पे आई थिंक ऑब्वियसली हर इनफरादी तौर पे आपकी वो मुख्तलिफ जो भी एक्सपीरियंसेस हों, या आप चाहते हो ऐसा हो या वैसा हो, बट आई थिंक कि अगर ये है कि I think that if you have to find a way, and whatever that way is and whatever level it is, but it's really कि आप वो किस रास्ते पे पढ़ रहे हैं, उसका मकाम क्या है, उसका end result क्या है, is will change in era to era. But it's really, if you want to go on that journey, you can go on that journey in any situation, in Is any that is era. is that what your process looks like? I mean, I try and do that. Yeah. And I think, like, there are times, I'm just as frustrated and pissed off as the next Pakistani. Like all But of us. I, yeah, but I think that at least, like, being where we are, and where बड़े शरीर में आप पिछले 200 साल में पैदा होते, पहले भी होते तो मुझे नहीं पता, वो पिछले 200 साल में तो सीन बैड ही था ना, तो तो बस सही है, मतलब अब आपको इसके साथ रहना है, और ऑब्वियसली इस बैड सीन में आप इतनी ज्यादा प्रिविलेज के साथ पैदा हुए हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे, आई थिंक, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि बहुत दफा होता है कि मैं भी हो रहा हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. और यही याद रखना चाहिए कि भाई आप पहले शख्स नहीं है जिसके साथ ये मुश्किल वक्त गुजर बिल्कुल. रहा है, और आपसे ज्यादा बड़ी मुश्किलें और पे भी गुजरी हैं. हम्म. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ. They say artists and authors they often become embodiments of the cities they had lived in or intimately associated with a particular space or place. Where do you feel like you belong the most? Hmm. आज का पाकिस्तान. I think, I mean, I've lived in the three big cities of Pakistan. I think 4 years in Islamabad, 5 years in Lahore. Um, and I enjoyed living there, and I've lived elsewhere in the world as well. And it is to my great
tragedy that I am most at home in Karachi, Pakistan. And I think कि पाकिस्तान में रहते हुए आधा वक्त कोई ना कोई आपका कत्ल करने की कोशिश कर रहा होता है. मौसम, दहशतगर्द, you know, people who want YouTube banned, whatever. But I think इन सारी जो ही मैं पिछले सवाल जवाब दे रहा था कि अगेन ऐसा नहीं है कि हम अकेली कौम है जिसके ऊपर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं. एंड आई थिंक या देयर आई थिंक अबाउट दिस ऑफन कि बेसिकली कि आप जहां भी पैदा हो रहे हैं, देयर इज सच ए स्ट्रॉन्ग visceral connection that you create with that. And I think about that often because I think of people when I've in my journalism work that I've spoken to people who are minorities in Pakistan, who are persecuted, who are oppressed, and have faced just unthinkable things. And they will still talk with a lot of fondness about the place they grew up, the house that they lived in, the food, or their relatives, or a song, or whatever. और वही एक बड़ी beautiful mystery and tragedy of being human, right? That it's completely random that you're born wherever the hell you're born. And for most people, those the experience can be very difficult, or it's challenging, or it's limited. But आपके साथ एक इतनी and again, this is not true for everyone. People can have visceral connections with places they're not born in. Obviously, depends on the those things. But for me, yeah, like I think Karachi, for so much of my adult life, was also a place I wanted to run away from. So in order to feel at home at Karachi really meant being at home with myself, being able to accept and deal with myself in order to deal with being here. But yeah, I think we do become like वो के the embodiment of your city or whatever. I think कि जहाँ से भी आप होते हैं, शहर हो, गाँव हो, जो ये है, वो, it obviously dictates so much of the kind of person you become and the values you have and the worldview that you have. And when you are working creatively, you are looking to reach down inside and figure out what do I want to say about this. And when you're reaching inside, you're going to go through those areas that these places shaped, right? और वही फर्क होता है कि जैसे कि मैं जब लंदन गया था तो रोज सुबह मैं उठता था और खिड़की खोलता था और देवर ग्रे स्काईज. Morbid skylines. Except if you've grown up in Karachi, so it's summer almost the entire year and एक मुख्तसर सा जाड़ा आता है, मगर उसके अलावा अभी भी फरवरी है और काफी गर्मी थी आज पूरे दिन. तो कराची में जब बादल आ जाते हैं तो दैट्स बीच वेदर, दैट्स bunk Ideal. weather, that is don't go to work or school, that is go to the beach or go to someone's house or whatever. So it's actually the best thing you can see when you open the windows is gray skies. And every day for my first week in London, I'd be like, yeah, great weather. And then you'd go out and be like, ये तो अल्लाह मियाँ का अज़ाब है. So I think, yeah, I think that to me is a great example के जहां से मैं था वहां से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक 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 वेदर फिनोमेना के साथ, उसका यही मतलब था कि मतलब अब कि इवन फॉर अ व्हाइल लाइक इवन दो माय सेंसेस वर टेलिंग मी कि ये सीन नहीं है, मगर मेरी यादें वुड लाइक कीप ट्रिपिंग मी अप. एंड आई थिंक कि बरतानिया में 3 साल रहने के बाद जितना मुझे शदीद किस्म का ट्रॉमा हुआ था कि मतलब अब मैं अब सूरज को के लिए ऐसी तड़प रहा होता है जैसे बच्चा माँ के लिए तड़प रहा होता है. तो ऑल एल्स दैट आई कंप्लेन अबाउट पाकिस्तान, we are blessed with a lot of beautiful weather here, beautiful sunshine. We're trying to destroy it with pollution, everything, but it's still और कुछ अल्लाह मियां आजाब दिखाएं, बस बरतानिया का मौसम ना दिखाएं. मैं उससे माफी So you wouldn't मांगता हूँ. want to live there again. अल्लाह ना करे, मतलब अगर अल्लाह मियां दोजख भेज दें, यूके ना भेजें. What's been the biggest mistake that led to a sea of opportunities for you? कोई ऐसा आपने What's been the बहुत बड़ा biggest मान mistake? या
कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो या किसी के साथ डीलिंग खराब की हो. This is all with regards to the creative process. Something that you've done which you may or may not regret, but it has unleashed a lot of opportunities for you. You've learned a lot about yourself. कोई profound वाक्य आई आपके थिंक साथ. मिस्टेक से ज्यादा मतलब जब भी आप फेल करते हो, you get something wrong. I think that obviously this is a big cliche, but that is always a really useful time to try and learn. Mhm. And आई थिंक आई मीन या कोई एक चीज पे मतलब कोई एक चीज पे मेरा दिमाग आई आई डोंट थिंक सेटल कर पा रहा है. आई फील दैट I mean, I feel to be fair, I'm also the sort of person who's just is doesn't very rarely satisfied with what I've done. So And why is that? I think कि वो एक तो आई थिंक बहुत अरसे तक एक बड़ा टॉक्सिक तरीका था अपने आप को मोटिवेट करने का कि नहीं, इट्स नॉट गुड इनफ, कीप वर्किंग हार्डर. I think I've been, my mid 30s, I had a nervous breakdown, and a lot of it was related to having really unhealthy habits, particularly towards work, pushing myself, using a lot of negative reinforcement. And I think there was एक हद तक फिर मेरे like my mind and body was just like, no way, bro. तू System कोई नया failure. रास्ता ढूंढ, ये नहीं होगा हमसे. So Hmm. since then I try and do take a little bit more pleasure, but I think even then there is this idea that, okay, this is how it can be even better, this can be even more perfect or whatever. And I found that like खासतौर पे मैं baking करता हूँ, जो बहुत That's शौक है wonderful. करने का. Hmm. और I like it because it's very difficult It's sometimes. meditative, It's maybe. super meditative and it Hmm. requires me to concentrate a lot, or it requires a sort of like चीजें तोलनी और नापनी पड़ती हैं जो अक्सर मैं नहीं करता हूँ जिंदगी में. तो वो मुझे जो पसंद है. और फिर उसमें वही होता है कि उसपे छोटी सी भी गलती से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है. But at the same time, you're eating something delicious and sweet afterwards. So, so I think that to me is a good balance. That I do enjoy the process of eating it, but I also Hmm. really enjoy challenging myself to get better at it. And I think उसमें मैंने यही realize किया था कि अक्सर ये होता है कि अगर आप गलत मतलब ना कि sometimes you'll make something the first time and it comes out right, Hmm. and you don't know what things you तुक्के में सही नहीं है. और फिर आप दूसरी दफा बनाते हो और फिर 10 करोड़ चीजें गलत जाती हैं क्योंकि जो पहले तुक्के चल रहे थे वो इस दफा नहीं चले. Hmm. और that actually then teaches you how to actually master that recipe. So for example, something as simple as brownies has the recipe I use has like 6 to 7 ingredients, but so many little things impact. मतलब कि उसका टेस्ट जो है वो एक दफा जो सेटल हो गया है तो प्रॉब्ली 61-62 का फर्क आता है. बट उसकी टेक्सचर, उसके ऊपर जो लेयर आती है, उसके अंदर जो चॉकलेट है, उसके अंदर जो चीनी है, उन सब का टेक्सचर और उन सब का एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग, that dependent on a billion things, and this is one of the simpler baking things. So तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आई थिंक वहां पे जब तक मैं गलतियां नहीं की थी मुझे पता ही नहीं था कि मैं सही क्या कर रहा हूँ और गलत क्या कर रहा हूँ. राइट. सो आई थिंक दैट and yet because it's tasty, so I think there has to be a balance where you are looking to do as well as you can, but you also have to enjoy what you've made. Hmm. And I think when I wasn't doing that, that led to like a mental health crisis. And I think since then that's something I try and work on. That and sorry, I think the other thing that baking से ही कि I also realized that I can't prioritize कि जी ये पैसे मिलने वाला काम है तो ये जो असली क्रिएटिविटी है इसी में काउंट हो रही है.
आप जिस तरीके से अपना घर सजाते हैं, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आप कौन से कपड़े बनवाते हैं, आप खाने में कौन सी चटनी का किस सालन के साथ इस्तेमाल करते हैं, these are all creative choices. Yes. And so you have to kind of enjoy that process everywhere. And when you start doing that, then you can take away the toxicity from it. Even if you're trying to improve, it's not coming from a negative place. It's not coming from a place of shame or anger or guilt. It's coming from a desire to experience more joy or more serenity or more, meditative insight that comes from pursuing this process. I think for every creative individual, आई वुडंट वांट टू से इट कि हम एकेडमिक्स को, जो हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग है, हम उसको, आई डोंट नो इफ वी शुड ब्लेम देम और नॉट, और द इन्फ्लुएंसेस दैट वी हैव बीन गिवन और प्रोग्राम्ड विद. Most of us, I would also include myself in it, kuch instances where I'm improving myself, but we fixate ourselves on the final product, on the finality of something, on something being Yeah. perfect in the end, and we tend to just ignore the entire process or the experiences attached with it, the psychological transitions that we go through. So आप मुझे बताएं, how do you archive your process? How do you, so that you could remember them, so that you could revisit them, and you could look at Ahmer back then and learn more and more about yourself, because I think that's essential for yourself. So how do you archive your ideas? Yeah, it's a really great question. I'd gone to a therapist when I moved back to Karachi. I've Mhm. been in therapy for like the last 9 years. That's I love wonderful. therapy. Yeah, I think I would encourage, I think it's like people think of it as you go for therapy when you have when you need to be cured of something. But I think therapy should be seen as like going to the gym for your mind and instead of your body. Or it's actually there's a lot of body work in therapy as well. Yes. um तो एनीवेज मैं थेरेपिस्ट के पास गया था. उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं अपनी जिंदगी बारे में जो ना व्हाई डोंट यू ट्राई योर राइटर write about your life as like chapters in a story or something. But then I was like, oh, actually I've been writing online, so I just need to Google. And I Googled whatever I'd written in different years, and obviously it wasn't written with the intention of कि ये मेरी life की thing है, but because I'd written it, I could remember where I Mm. was in each of those things. Um, so the internet is very useful because I've been very terrible at archiving my stuff. And I think when I was younger, I didn't realize the importance of it. And now there's so much to do Everything is that has to be archived. Yes. या और अब मतलब इतनी सारी 10-15 साल से मैं ऑनलाइन चीजें कर रहा हूँ, तो उनको इकट्ठा कर मुझे याद भी नहीं है कौन सी चीज कहाँ थी, कब हुई थी. और आई थिंक ये एक आई हैव डन अ डिससर्विस टू माई सेल्फ एंड आई वांट टू गेट अराउंड टू फिक्सिंग दैट. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे मुल्क में आर्काइविंग की अहमियत नहीं है, तारीफ की अहमियत नहीं है. हमारे यहाँ अगर कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती भी है तो हम बहुत जल्दी उसको एक नस्ल के अंदर दूसरी नस्ल तक, दूसरी जनरेशन तक सॉरी भूल चुके होते हैं. वी आर we have a habit of deleting and erasing and editing the past. And so even a personal archive of your notes in a diary or whatever is super valuable because it represents um, Your growth. it represents your growth, but it also in the larger social sense, Yeah. it represents something being preserved when everything else is Wiped out. deliberately or through lack of care is wiped out, is lost, it goes away. Mhm. और आई थिंक ये हमें पाकिस्तान में खास तौर पे 75 सालों में हर जनरेशन ये ट्रॉमा लेके आगे चलती है, क्योंकि when they come of age, there's the flux we've been talking about, and there's so many things, that they can't hold on to. And then they try and build something themselves, and then that flux comes again, it wipes that out, and they have that trauma. And then, we're not able to connect across generations for one of those reasons because there's so little that we have in common. We've lived in such different contexts. Um, and that's where archiving is important. That's where that ability
to make connections and realize that, okay, we have these connections that go much deeper. Um, because होता ये है कि जब आप गलत तारीख को गलत नजरिए से देख रहे होते हैं, और हमारे तो जानबूझ के तारीख को गलत नजरिए से पढ़ाई जाती है, तो वही होता है कि वो आपको पढ़ा तो रहे हैं, बट आपके जिस्म में, आपकी रूह में भी एहसास होता है कि यार, जहां मैं हूँ, मेरी इस सोसाइटी से, इस जगह से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, एंड a false story will not make that connection work. And again, that's why archives वगैरह matter, because they give you an ability to connect. So I think, for example, एक मैं आपको मिसाल दूं कि Pakistan is actually perhaps one of, well, definitely one of them, perhaps even the most important centers for Buddhist thought, particularly in the Yes. early eras of Buddhism's Mm. spread, and then its interaction with Hellenistic cultures and what emerges out of that. All of that happened in what is now Pakistan. Not all of that, but so much of that happened where what is now Pakistan. But क्योंकि हम अपनी तारीख में जी, हम तो शुरू ही तब हुए थे जब पहला मुसलमान आया, और उस, I'm not even going to get into all of that. But my point is that when we are walking in the same valleys where all of this history took place, but we're completely cut off from it, we have no idea about it, then we are left with a profound sense of disconnection and disillusionment. And the only way to get back to that is to be able to be at one with all these different parts of who you are and what this land is and what this society is. Yes. Or archiving is one of the best ways to kind of be able to do that process. On that note, I'd like to ask the last question. If I ask you to give three positive affirmations to yourself, Yeah. what would they Yeah, be? I actually had this was something my therapist made me do many years ago, and I have it written down. And for quite a while, I used to um, say it every single day. And I would say it sounds really silly when you say it out loud, I'm sure but they're not. yeah, it was very important, because the reason it sounded silly was because I didn't want to give myself that kindness, and I realized that अगर आप अपने आप के साथ ये नहीं कर सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया में क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं. It Mm-hmm. really the only thing, the only person, the only human that you can change is yourself, no True. one else, right? So here it goes. It's like I love myself. I'm a good guy. I got this. And I used to say this, and I still try and remember that, because I had a lot of self-loathing, and that self-loathing meant कि अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और फिर जब मैं इस मोड में होता था, मुझसे बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, बस मैं बिस्तर से नहीं निकल रहा. And this was a way of kind of trying to, like, every time I would say it, I'd roll my own eyes, but It helps a by lot. saying it again and again and again, it got to the stage where I wouldn't need to say it that often. And then when I would say it, it was You're coming manifesting naturally. it. Yeah, you're Yeah, manifesting it. there's a friend of mine who told me that. She was just like, hey, bro, ये आप don't think कि जब तक मैं पहली दफा में feel नहीं कर रहा तो सच नहीं है. You are actually tricking the brain into saying this again and again until it True. believes it. Yes. And so, yeah, I would say tell yourself that you love yourself as often as you can. Because if Thank you can't you. do that, there's nothing else you can really truly love. Thank you very much. I wish we could have continued and expanded this conversation, and I think we can go on and on. And I have so many more questions, but it's time to end the conversation. Thank you very much for your time. Thank you for all the Thank you. amazing Thank you things so much that for you've having said. me. I hope the nature of this talk did not cause any inconvenience or Not at all. discomfort for you. Not Thank at you. all. And I've learned a great deal of things from you when you taught us at NCA. You were my Mhm. academic teacher, and one of those very rare few personalities in my life who've encouraged me to use my voice for something, to find purpose in something. And so I'm truly grateful to you. Thank you very much. I hope that whatever you do in your life, you do it to the best of your abilities. And thank you so much for helping all of us who's listening to this. And whatever you said is definitely going to help us for in our creative processes. And I hope all of these questions that you've answered help your creative process as well. Thank you so much. Thank you. That's beautiful, and I'm very, very honored
Thank you very much. Very grateful. Thanks. Have a Thank have you a everyone for great seeing me time. live. Okay, ji, Khuda Hafiz.